Dr. Diksha and I'm a fourth year medical student. I welcome you all to my session of exercise with me. इसमें हम कुछ 10-minute warm up exercises करेंगे and gradually we will do some more exercises. See, हमारा इतना busy schedule होता है कि every time along with college it's difficult to manage exercise and सबको एक अच्छा body structure, एक healthy lifestyle चाहिए. So I had taken this initiative so that एक वार्म अप एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करेंगे एंड दीज एक्सरसाइजेस एनी एज ग्रुप पीपल कैन परफॉर्म. सो आई होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा. प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस. दे आर वेरी कन्वीनियंट. यू कैन फॉर श्योर परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेस. द ऑल यू नीड इज जस्ट अ मैट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नो इक्विपमेंट एक्सरसाइजेस हम करेंगे. इसमें हमें कोई भी इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है एंड धीरे धीरे हम अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप करेंगे. जैसे जैसे हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद हम कुछ बेसिक इक्विपमेंट जैसे कि सम वेट्स ऑफ फ्यू केजीज एंड कुछ स्ट्रेच बैंड्स हम ले लेंगे. तो इतना कुछ नहीं है, आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है. लेट्स स्टार्ट दिस exercise because every day we plan for tomorrow and tomorrow never comes. So let's start exercising and that's all. Please share this video with your friends and thank you all. So let's start today with 10 minutes warm up exercise. So सबसे पहले इस warm up exercise में हमें किसी भी equipments की नीड नहीं है. तो आप लोग मैट ले लीजिए और खड़े हो जाइए and we'll start counting and let's perform together with me. First exercise is wrist rotation. So start counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेकेंड एक्सरसाइज हमारा होगा जो हमारा सेकेंड वार्म अप एक्सरसाइज है वो है पाम्स अप एंड डाउन. सो उसके लिए पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड लाइक दिस और उसके बाद हमें पाम्स को सिर्फ अप एंड डाउन करना है लाइक दिस. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Now the next exercise is we'll rotate the shoulder. So let's start with the shoulder rotation. Put your shoulder like this and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. The same way but reverse like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Done. After shoulder rotation जो next exercise है उसमें हमें full arm rotation है. So सबसे पहले full arm rotation में पूरा arm rotate करना है. तो हाथों को ऐसे straight कर लीजिए and then start rotating full arm complete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ऐसे अज्यूम करिए कि आप एक बड़ा सा जीरो बना रहे हैं. सेम एक्सरसाइज में परफॉर्मिंग बट अब रिटर्न रिवर्स. सो सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके. आफ्टर कंप्लीट शोल्डर मतलब कंप्लीट हैंड रोटेशन के बाद हमें करना है साइड टू साइड. सो लाइक दिस 1, 2, 3, 4. 45 डिग्री एंगल आप बनाएंगे. लाइक हैंड शुड बी इन 45 डिग्री लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो साइड जो नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है हमारा वो है लेटरल बेंड्स. सो इसके लिए लाइक दिस विल बेंड. पहले मैं शो करती हूँ फिर आप स्टार्ट करना. 1, 2, 3, 4. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. After lateral bends, let's continue with flexion and hyperextension. So इसके लिए आपको ऐसे साइड में हो जाइए and like this flexion and hyperextension. Flexion बिना knees को bend किए you can see flexion and hyperextension. Got it? Okay, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. So अब हम स्टार्ट करते हैं द सेकंड लास्ट वार्म अप एक्सरसाइज व्हिच इज नी रोटेशन. नी रोटेशन के लिए आप अपने लेग्स को पास ले आओ और नी शुड बी लाइक पास में एंड देन विल स्टार्ट बेंड एंड स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस. 1, 2, 3. ओके. सो लेट्स स्टार्ट एंड ऑन काउंट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लास्ट जो हमारा लास्ट फॉर्म एक्सरसाइज है वो है नेक रोटेशन. सो नेक रोटेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी हमें आईज क्लोज करके इसे परफॉर्म नहीं करना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग आवर नेक फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. देखो एक सर्कल क्लॉकवाइज एंड देन दूसरा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे 3 टाइम्स वी हैव टू डू. So we are done with the warm-up exercises. Thank you so much. Please do like my video